मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने करा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम बेटा, वो हमारा हो गया था। अब हम इसे डीजी क्लास में देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले डॉबिनस ट्रेड के बारे में हम देखेंगे। लेट्स सी डॉबिनस ट्रेड इन डीजी क्लास। ओके बेटा, आई होप यू आर ऑल बी सेफ एट होम। आप सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। ओके बच्चा, लेट्स सी डॉबिनस ट्रेड। What would have happened if we had not classified the elements? Early humans made the first table of it contained earth, water, air, and fire. Aristotle proposed a fifth element, the quintessence. Centuries later, after the identification of many of the elements we know now, Dalton arranged these elements from light to heavy by weight. Earlier, chemists had started dividing elements into metals and non-metals. About 70 elements were discovered by the 19th century. At present we know more than 111 elements. How do we sort out elements? By appearance, by reactions, by weight. Let us discuss how earlier chemists arranged the elements. In 1829, Johann Dobereiner claimed that certain elements could be grouped together in threes. For example, he arranged lithium, sodium, and potassium as a group. The middle one had properties that were the mean of the properties of the other two elements. When we consider relative atomic mass, the middle one, sodium, has the mean value of 7 and 39 to 23. Calcium, strontium and barium are a similar triad in which strontium's atomic mass has the mean value. बेटा, मीन वैल्यू फाइंड आउट करी जाती थी फर्स्ट और सेकंड से, वो थर्ड के इक्वल मानी जा रही थी डॉबिनस ट्रेड में। ओके बेटा, लेट्स सी ब्रोमीन, आइडियम और क्लोरीन की मीन वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट और लास्ट वाले के, थर्ड वाले के मीन वैल्यू जो होगी वो सेकंड के इक्वल होती है। लेट्स सी। ओके बेटा, देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले के सेकंड के इक्वल। Newland's law states that just as a new musical octave starts at every eighth note, similar properties are exhibited by the eighth element. John Newlands compared the periodic behavior of elements with the musical scale do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Newlands arranged the elements like this: hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and a new start, fluorine, based on atomic weights. Newlands represented beryllium and boron by the symbols Gl and Bo, respectively. Modern chemists have given the symbols Be and B to beryllium and boron, respectively. Since the octave law was proposed before the discovery of noble gases, there was no place allocated for these gases. Newlands failed to explain the behavior of heavier elements such as calcium.
His system of classification holds good for the lighter elements. However, periodicity was first explained by Newlands. He showed that properties of elements were related to their atomic masses. Newlands explained how certain elements resembled one another in behavior. Chlorine, bromine, and iodine are violently corrosive and form acids. Lithium, sodium, and potassium combine violently with oxygen or water, and their oxides form caustic aqueous solutions. Newlands listed the elements as symbols, along with their position numbers. He did not give a name to these position numbers. Now, since the establishment of the modern periodic table, we understand that the position number is nothing but the atomic number. On 1st March 1865, Newlands presented his ideas at a lecture at the Chemical Society, a forerunner of the Royal Society of Chemistry. The publication committee humiliated him and rejected his paper on the grounds that it was purely theoretical and unproven. They made several criticisms, including there was no space provided for undiscovered elements. 2 elements were placed in one box. Unaware of Newlands' ideas, Mendeleev, a Russian chemist, designed an improved periodic table. It gained acceptance because he left spaces for undiscovered elements. 100 years after the death of Newlands, the Royal Society of Chemistry recognized his discovery of periodic law by placing a blue commemorative plaque on the wall of his birthplace. Note its inscription. What do we call this today? Newlands, the first person to give each element a position number. अब उन्हें क्या कहा जाता है? ओके बच्चा, लेट्स सी. एटॉमिक नंबर इन्हें कहा जाता है एटॉमिक नंबर. Next question. Newlands was the first person to give each element a position number. Give the modern symbol and name of gallium and beryllium. Beryllium and boron. Bo boron or Gl chlorium. Who discovered the periodic law? Periodic law किसने डिस्कवर करा था? जे न्यूलैंड्स ने periodic law डिस्कवर किया था बच्चे. डॉबिनर्स ट्रेड 3 ग्रुप्स में एलिमेंट को डिवाइड किया था. फर्स्ट और थर्ड की जो है रिजेंबल कर रही थी फर्स्ट सेकंड के साथ. ओके बच्चा. ओके बेटा, तो हमने पढ़ा था डॉबिनर्स और न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव. आज हमने डीजी क्लास में डॉबिनर्स और न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव करा है. डॉबिनर्स और न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव में बेटा क्या होता है? डॉबिनर्स जो थे उन्होंने उस वक़्त एलिमेंट्स को कोई नाम नहीं था. उस वक़्त ट्रेड बोला जाता था, एलिमेंट्स नहीं बोला जाता था. ओके बेटा, फर्स्ट 3 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया था. और फर्स्ट और थर्ड की जो है एवरेज है वो किसके इक्वल निकलती थी? सेकंड के. लेकिन उनकी काफ़ी कुछ लिमिटेशंस होने की वजह से न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव आई. ऑक्टेव ने क्या करा था? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे होते हैं उनके उस पर 8 उसमें डिवाइड किया गया था एलिमेंट्स को.
और फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से बिल्कुल क्या करता था बेटा, ये रिजेंबल करता था। फर्स्ट एलिमेंट जो है लास्ट एलिमेंट से रिजेंबल करता हुआ पाया था इन्होंने। ओके बच्चा, लेकिन इन्होंने अपनी जो थी जगह बनाई नहीं थी, हाइड्रोजन के लिए प्रॉपर जगह नहीं बनाई थी। इनकी काफ़ी कुछ लिमिटेशंस आने की वजह से इनकी भी क्या है टेबल बाद में ख़त्म कर दी गई। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई थी बेटा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आई थिंक यू आर ऑल बी फाइन, सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और बेटा सभी आप अपनी नोटबुक्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, आपके अब एग्ज़ाम्स होंगे। सो यू बी केयरफुल फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके बच्चा, do your work neat and clean in your notebook. Okay बच्चा, bye, be okay at your home.